राम एक भेरो ॿीहर भलीकार नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सुप्रीम कोर्ट इहो चयो आहे त जेके बि सुप्रीम कोर्ट जे मथां तनक़ीद कनि था उन्हनि जे मथां जेके बि केस दाख़िल कया विया आहिनि उन्हनि खे ते केस दाख़िल न करण जो हुकुम बि ॾिनो आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट में अॼु इहो बि चयो वियो आहे त अदलिया मथां जेका बि तनक़ीद कंदड़ जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेका FIA कार्रवाई करे रही हुई उनखां बि उन्हनि खे FIA खे रोके छॾियो आहे। इन हवाले सां अॼु सुप्रीम कोर्ट में जेको सहाफ़ियुनि खे हिरासत करण बाबति पाण मुरादो नोटिस हुयो उनजी ॿुधणी थी ऐं उन में अदालत इहो चयो आहे त अदलिया जे हर फ़ैसिले ते तनक़ीद करे सघिजे थी। इन सां गॾोगॾु हुनजो त चीफ जस्टिस साहिबु इहो चयो त तनक़ीद रोके अदालत में जज जो फ़ाइदो न पर उनजो नुक़सानु थींदो, छाकाणि त जेसीं ताईं फ़ैसिलनि ते तनक़ीद न थींदी जज ऐं अदालत बि पंहिंजो जेको आहे उहो जाइज़ो न वठी सघंदी। अॼु सहाफ़ियुनि जे हवाले सां बि उन्हनि इहो जेको केस हुयो ऐं उन में सहाफ़ियुनि खे इहो रिलीफ मिलियो ऐं काफ़ी शयूं जेके आहिनि से उहे अॼोकी इन हेयरिंग में डिस्कस थियूं आहिनि। इन ते वरी असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। आगा मसूद साहब सीनियर तज्ज़िया निगार आहिनि असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब मुझे सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ मैं, बिल्कुल सुन रहा हूँ। आगा साहब एक और चीज़ ये कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो क्योंकि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पर जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर तनकीद की थी तो उनके खिलाफ FIA ने कार्रवाई शुरू कर दी थी, उनको नोटिस भेजे थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने FIA को रोक दिया है कि कोई भी कार्रवाई जो है इन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ना की जाए, बल्कि ये हर किसी का हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर तनकीद करे और तनकीद करनी अच्छी बात है क्योंकि लेकिन उन्होंने कहा कि अगर फ़ैसलों पर तनकीद की जाए तो ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर गाली गलौज से काम लिया जाता है तो वो शायद कबूल नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सेहतमंद तनकीद के लिए रास्ते खोल दिए हैं कि आप जो है वो पायदार और तामीरी तनकीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बिल्कुल खुलेआम कर सकते हैं और फोरम फिर कोई भी हो, सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, आप तनकीद कर सकते हैं? भाई सबसे बड़ी बात तो ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इज्जत दी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में शरीक किया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सलाम करना चाहिए। उन्होंने आज़ादी सहाफ़त के सिलसिले में बहुत बड़ा काम किया है। देखिए बात असल ये है कि हमने ये महसूस किया है कि जब से इलेक्शंस का ऐलान हुआ है कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ समतों से कि सहाफ़ियों को दबा के रखा जाए, खौफजदा किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज जो काजी फिरोज साहब ने जो फैसला किया है उनको सलाम करना चाहिए और उन्होंने दरअसल ये कि सहाफ़ियों के दिल जीत लिए, क्योंकि बात असल ये है कि जहाँ किसी ने तनकीद की फ़ौरन FIA मतलब मुतहर्रिक हो जाती है, जहाँ किसी ने कोई बात की तो कोई दूसरे IB मुतहर्रिक हो जाती है। मतलब ये ही गाल तो सुठी कोन है ना, मां माण्हुनि खे तव्हां खौफ मुब्तला करे तव्हां उनजी वफ़ादारी सां वठो, तमामु दिस इज़ वेरी बैड। आई डोंट एग्री विद इट एंड आई टेल यू कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आप भी तनकीद कर सकते हैं और मेरे फैसलों में दुनिया में तनकीद होती है फैसलों पर और नहीं होती, मतलब यू कैन क्रिटिसाइज द चीफ जस्टिस, यू कैन क्रिटिसाइज द डिसीजन। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा फैसला है। हम चीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सलाम करते हैं। उन्होंने सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ अता किया है, सहाफ़ियों को काम करने के लिए एक माहौल पैदा किया है, उन्होंने खौफ ख़त्म किया है और उन्होंने सहाफ़ियों की इज्जत में इजाफा किया है। और मैं समझता हूँ कि जब तक कि आप तनकीद का हक लोगों को देते रहेंगे मुल्क तरक्की करेगा। जिस दिन आप लोगों के मुंह बंद कर दिए, उन पर टेप लगा दिया, आप समझ जाइए कि पूरा माशरा गुम हो जाएगा और nobody will actually will come out with the true facts. So I think this is one of the best decision and we salute the Supreme Court Chief Justice. अच्छा आगा साहब एक चीज़ तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि तनकीद का हक होना चाहिए, इज़हार आज़ादी हम सबका हक है और सहाफ़ी को तो होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए इज़हार आज़ादी, लेकिन उसके साथ साथ सहाफ़ी पर भी एक एहसास ज़िम्मेदारी भी होना चाहिए सहाफ़ी के अंदर कि वो जो बात कर रहा है वो एक तो अखलाक के दायरे में हो ही हो लेकिन ज़िम्मेदाराना भी हो। लेकिन हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया पर या कभी कभी टॉक शोज़ में सहाफ़ी इस तरह की गुफ्तगू कर जाते हैं कि जो गैर ज़िम्मेदाराना होती है, गैर महज़िब होती है और फिर मतलब जिसका सर पैर पाँव तक नहीं होता। तो ये कितना ज़रूरी हो गया है। अब इस आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप हम पर तनकीद करें, लेकिन अब खुद मीडिया के लिए कितना ज़रूरी है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। बात ये है कि पूरी सोसाइटी जो है पोलराइज हो गई है। देखिए कहना पड़ता है कि जो है ना वो भी तस्लीम हो गए। तो चुनाचे दिखा था कि जब उनके में कोई बात नहीं होती या उनको कोई उनकी पसंदीदा पार्टी के बारे में कोई अच्छी राय नहीं आती तो वो जज्बाती हो जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं
کہ جو آزادی صحافت کے خلاف ہوتی ہے. ایکچولی ہمیں ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے, اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, اور اگر ہم ایکسٹریمسٹ ہو گئے تو ہم میں اور پھر ایک عام آدمی میں جس کے پاس تعلیم نہیں ہے, شعور نہیں ہے, پھر ان میں کیا فرق ہوگا. تو میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ صحافیوں کو بھی اس سلسلے میں اپنا صورتحال پہ غور کرنا چاہیے, اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے, اپنے کارکردگی پہ غور کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم سوسائٹی کو مضبوط کر سکتے ہیں اور یہ پولرائزیشن کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی صحافی سمجھتا ہے کہ میں حرف آخر ہوں اور میں دانشور ہوں, میں سمجھتا ہوں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اعتدال کے راستے میں پاکستان کی اور صحافت کی بقا ہے. اچھا آغا صاحب, ایک اور چیز بھی ہے کہ جس طرح الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا ہے وہ ٹھیک ہے کسی حد تک ایک ریگولیشن کے اندر آتا ہے, لیکن ہمارے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ تو بے لگام گھوڑے کی طرح ہے. وہاں پر چلیں وہ تنقید ہوتی ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے, لیکن وہاں پر مس رپورٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت سی غلط چیزیں, غلط خبریں وہاں پر بتا دی جاتی ہیں. تو ایک تو اس کا اثر ہماری سوسائٹی پر کتنا نیگیٹو پڑ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ضمنی سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہیں وہ اس طرح کا ایک میکانزم بنائیں کہ اگر سوشل میڈیا پر, ڈیجیٹل میڈیا پر کوئی فیک نیوز چل رہی ہے تو ہم اپنے اخبارات اور ٹی وی چینلز پر یہ چلائیں کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے وہ غلط ہے, حقیقت کے برعکس ہے. آپ سے بتاؤں, یہ کوشچن ہے اخلاقیات کا کہ آپ کے اندر کتنی اخلاق ہے, کتنے آپ سمجھتے ہیں, کتنی آپ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, آپ کے اندر کتنی شعور ہے کہ آپ ملک کو حالات سے نکال کے آگے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ایک بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. I'm sorry, you don't mind it. کچھ لوگ ہیں ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ ملک میں کنفیوژن کریٹ کریں, اور یہ کنفیوژن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیں یہاں پر تو ناجائز دولت بہت سے لوگوں کو, ان کو بعض لوگوں کو دینے میں کہ ان کو کیا حرج ہے. میں جملہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو وطن سے محبت ہے تو کم از کم یہ فیک نیوز نہ چلائیں. اور وہ لوگ کہ جو فیک نیوز کو اخبار میں زینت بناتے ہیں پرنٹ میڈیا میں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں بلکہ اس فیک نیوز کے خلاف جملے لکھیں. اور میں سمجھتا ہوں اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے, پاکستان کے انتخابات جو ہو رہے ہیں اس میں جمہوریت کی بھلائی ہے, رول آف لا کی بھلائی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم سب جو ہے نا سفر کریں گے. اچھا آغا صاحب, ایک چیف جسٹس صاحب نے ایک اور بھی بات کی, کہا کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت پر تنقید سے لوگوں کو روک کر کوئی آپ ججوں کا یا عدلیہ کا فائدہ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اس سے تو عدلیہ اور ججز کو نقصان ہوگا. تو کس طرح کے آپ کیا ازیوم کر رہے ہیں کہ کس طرح کے نقصان اور فائدے کی بات کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب اس جملے؟ دیکھیے میں بتاؤں گا چیف جسٹس صاحب, دیکھیے بنیادی طور پر میں ان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اور جانتا بھی ہوں. ان کے والد صاحب کے بارے میں میں نے بہت پڑھا ہے جب وہ قائد اعظم کے ساتھ تھے. بات اصل یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک آسودگی بقنی میں there must be some goodness in the society. He wants that. لیکن بیچ میں ان کے لیے بھی تو رکاوٹ ہے نا. آپ کو معلوم ہے کہ جو رکاوٹ ہے ان کو جانتا ہوں, لیکن ان کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم مطلب نیوز کے سلسلے میں یا اپنے آزادی صحافت یا تنقید کے جو انسان کے پاس جو حق ہے 19A اور 19 جو کانسٹیٹیوشن میں ہے آزادی صحافت کے سلسلے میں, بولنے کے سلسلے میں, ایکسپریشن کے سلسلے میں, تو وہ میرا خیال ہے کہ he wants it should be implemented in later respect. This is my view. ٹھیک ہے آغا مسعود صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ویورز اساں اج ॻाल्हि ॿोल कई सी सुप्रीम कोर्ट में अॼु सहाफ़ियुनि खे हिरासत करण बाबति जेको पाण मुरादो नोटिस हुयो उन जी ॿुधणी थी, ऐं उन में चीफ जस्टिस साहब ॾाढा ज़बरदस्त रिमार्क्स बि ॾिना. इन हवाले सां उन्हनि FIA खे हुकुम जारी करे छॾियो त सुप्रीम कोर्ट ते तनक़ीद करण ते जिन सहाफ़ियुनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई कई पई वई, उहा कार्रवाई फौरी तौर ते रुकी वञे ऐं कंहिं बि क़िस्म जी कार्रवाई जेका आहे उहा सहाफ़ियुनि जे ख़िलाफ़ न कई वञे. ऐं उन्हनि चयो त असां सम्झूं था त इज़हार जी आज़ादी जो हक़ हुजणु खपे ऐं माण्हू तनक़ीद करे अदलिया ते, अदलिया जे फ़ैसिलनि ते तनक़ीद करे सघे थो, पर उन सां गॾोगॾु ज़रूरत इहा आहे त जेकॾहिं तनक़ीद बि कजे, तामीरी ऐं मुस्बत तनक़ीद कजे, ऐं उन में जेको आहे सो ज़िमेवारी सां जेके शयूं आहिनि उहे बयानु थियणु खपनि. असां वटि खोड़ सारी मिस रिपोर्टिंग थींदी रहे थी चैनल्स ते बि, अख़बारुनि जे बि अंदरि, पर उन जी सूरत हाल इहा आहे त उन जी कंहिं बि क़िस्म जी को ज़िमेवारी जो अहसासु न हुजण जे करे पोइ उहा जेका तनक़ीद आहे उहा काफ़ी हद ताईं उन जा जेके नतीजा निकिरंदा आहिनि उहे ॾाढा मनफ़ी निकिरंदा आहिनि. त इन हवाले सां सहाफ़ियुनि खे बि पंहिंजी ॻाल्हि बयानु करण जे दौरान हिकिड़ी ॻाल्हि त इख़लाक़ियात जो मुज़ाहिरो त करणु ई घुरिजे, पर साॻिए वक़्तु ज़िमेवारी जो अहसासु बि
ऐं उनजो ख़्यालु ज़रूरु रखणु घुरिजे त उहो साफ़ ई, छाकाणि त उहो इंतिहाई ज़िमेदारी सां जॾहिं ऐं उन पंहिंजी ख़बर खे अॻियां सोसाइटी में पहुचाईंदो त उनजा नतीजा बि जेके आहिनि उहे यकीनन मुस्बत निकिरंदा। पर असां वटि जेको ख़ासि तौर ते जेको बिगाड़ पैदा थियो आहे उहो डिजिटल मीडिया जे यानी कि सोशल मीडिया जे अचण सां थियो आहे। ऐं उते हर माण्हू पाण उहा ॻाल्हि करे थो छॾे, पाण हिकिड़ी कूड़ी ख़बर खे अॻिते वधाए थो छॾे। हिकिड़ो माण्हू का कूड़ी ॻाल्हि उते लिखे थो ऐं उनखां पोइ उहा हज़ारनि माण्हुनि ताईं हिक ॿिए खां उहा कॉपी पेस्ट थी, उहा शेयर थी अॻिते पहुची थी वञे, जंहिंजे करे बि जेको आहे उहा हिकिड़ी कूड़ी ख़बर जेका आहे उहा सर्कुलेट करे रही हूंदी आहे। उन हवाले सां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐं प्रिंट मीडिया खे ज़रूरु बि सोचणु घुरिजे त जेकॾहिं कुझु जंहिं ते थींदो बि आहे त जंहिं कंहिं बि माण्हू जे मुतालिक़, कंहिं बि शख़्सियत जे मुतालिक़ जेकॾहिं सोशल मीडिया ते का कूड़ी ॻाल्हि हली रही हूंदी आहे, का कूड़ी ख़बर हली रही हूंदी आहे, का जाली ऐं मनफ़ी प्रोपेगेंडा थी रही हूंदी आहे त उहा इलेक्ट्रॉनिक ऐं टीवी मीडिया ते अची करे पोइ उहो अची ॿुधाईंदो आहे त जेको आहे सो जेका ॻाल्हि हली रही आहे, जेका ख़बर हली रही आहे उहा हक़ीक़त जे उबतड़ आहे। पर पाण मुरादो बि मीडिया खे इन ते चेक एंड बैलेंस रखी करे शयूं बयानु करणु घुरिजनि। जेकॾहिं कंहिं बि क़िस्म जी का ग़लति ख़बर सोशल मीडिया ते हले पई थी त टीवी चैनल्स ऐं अख़बारूं उनखे पाण मुरादो आवाम खे आगाही लाइ चवनि त हीअ ख़बर जेका आहे उहा कूड़ी आहे, बेबुनियाद आहे मुंहिंजे ख़्याल में। ऐं हूअं जंहिं बि समाज जे अंदरि जेकॾहिं तनक़ीद ते पाबंदी हूंदी, कंहिं जेकॾहिं इज़हार जी आज़ादी ते न हूंदी, इज़हार ॻाल्हाइण ते लिखण ते पाबंदी हूंदी त उहो हिकिड़ो ॿुसाटिजी वेंदो उहो माहौल ऐं उन माहौल में ताज़गी न रहंदी ऐं पोइ उहा पोलराइज़ेशन जो शिकार उहा सोसाइटी थी वेंदी। मुंहिंजे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट जो जेको अॼोको इहो फ़ैसिलो ऐं जेको हुकुम आहे उहो ॾाढो ज़बरदस्त आहे। इहो साराहण जोॻो आहे त इज़हार जी आज़ादी बि हुजे ऐं ज़िमेवारी जो अहसासु असांखे पाण खे पैदा करिणो पवंदो। मुस्बत ऐं जेका सुठी तनक़ीद आहे उहा थियणु खपे, अदलिया जे फ़ैसिलनि ते थियणु खपे, हुकूमत जे फ़ैसिलनि ते थियणु खपे। हर माण्हू जे मथां सुठी ऐं मुस्बत तनक़ीद ऐं तामीरी तनक़ीद ज़रूरु थियणु खपे। तनक़ीद बराए वरी इस्लाह हुजणु खपे, तनक़ीद बराए तनक़ीद न हुजणु घुरिजे। ऐं हिक ॿिए जे जो एहतराम खे नज़र में रखी करे जेकॾहिं तनक़ीद कई वेंदी त उनजा समाज ते मुस्बत असर जेके आहिनि से पइजी सघनि था। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई, ॾींदा इजाज़त, अल्लाह भाई।